નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 10ના સંસ્કૃત વિષયના પાઠ નંબર 17 સ્વાભાવિકમ સાદૃશ્યમના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. શરૂ કરીએ પ્રશ્ન નંબર 1થી. અદોદતેભ્યઃ વિકલ્પેભ્યઃ સમુચિતમ ઉત્તરમ ચિનુત. પહેલો સવાલ, કેન રૂપેણ પદાર્થા પરસ્પરમ ભિન્ના પ્રતીયન્તે? તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બી, સત્તા રૂપેણ. બીજું, यदा पदार्थाः क्रियायां प्रयुक्ता भवन्ति तदा कस्य प्रतीतः भवति? तो जवाब आवशे विकल्प ए, सादृश्यस्य. त्यार पछी त्रीजुं, स्वर्णादयः सन्ति? तो जवाब आवशे बी, धातवः. चौथुं, पतंजलेः स्थितकालः कति वर्षेभ्यः पूर्वमस्ति? तो जवाब आवशे विकल्प ए, 22 वर्षेभ्यः पूर्वम्. त्यार पछी पांचमुं, समासेषु आस्यताम् इत्युक्ते कीदृशा जनाः परस्परं निकटासना भवन्ति? तो जवाब आवशे विकल्प ए, आंतरिकं समानत्व पश्यन्तः. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, विशेष्यानुसारं भक्तिवचनयुक्तम् उपयुक्तं विशेषण पदम रिक्त स्थाने लिखत. पहलू, संसारे खाली जग्या पदार्थाः सन्ति? तो जवाब आवशे संसारे विविधाः पदार्थाः सन्ति. बीजू, खाली जग्या व्यवहारे भोजनार्थ जना निमंत्रा? तो जवाब आवशे सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ जना निमंत्रिता. त्रीजू, इवमेव खाली जग्या पशूनामपि प्रवृत्ति भवति? तो जवाब आवशे इवमेव ग्वादीनाम पशूनामपि प्रवृत्ति भवति. त्यार पछी चौथुं, खाली जग्या वैवाहिकं सिद्धान्तुं पदंशन्ति? तो जवाब आवशे मानवीय व्यवहारिक. पांचमुं, आकारेण किंचित कृशः जनः कृशेन खाली जग्या सह न तिष्ठति? तो जवाब आवशे आकारेण किंचित कृशः जनः कृशेन जनेन सह न तिष्ठति. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, एक वाक्येन संस्कृत भाषायाम् उत्तरत. पहलो सवाल, परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु कीदृशम् अनर्थाय भवति? उत्तर, परस्परं भिन्नेषु पदार्थेषु किंचिदेकं स्वाभाविकम् आन्तर्यथ भवति. बीजू, के निकटासनाः भवन्ति? उत्तर, सामाजिके व्यवहारे भोजनार्थ निमंत्रिताः जनाः अकारतः प्रकारतस्य भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, किन्तु यदा तेषां भोजनविद्यो प्रवृत्तिः भवति तदा ते स्वीकीयम् अनन्तरिक समानत्वं पश्यन्त परस्परं निकटासनाः भवन्ति. त्यार पछी त्रीजू, गोष्ठेषु गावः केन सह शेरते? उत्तर, गावः सायंकाले गोष्ठतु समागत्य स्ववत्सेन सह शेरते. चौथुं, लोष्टः कस्य विकारः वर्तते? उत्तर, लोष्टः पृथ्व्याः विकारे वर्तते. पांचमुं, पृथ्वीवाग्ने केन सह संबंध वर्तते? उत्तर, पृथ्वीवाग्ने सूर्येण सह संबंधः वर्तते. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, विसर्ग संधिः प्रयोजत. स्वर्णादयः प्लस धातवः तो स्वर्णोदय धातवः. कृषेः प्लस सहासते तो कृषे सहास्ते. तेः प्लस इवे एटले तैरेव. प्रकारतः श्च एटले प्रकारश्च. नियमः प्लस अयमः प्लस दृश्यते तो नियमोऽयं दृश्यते. त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, रेखांकित पदानि आधुक्य कौष्ठगते सर्वनामे प्रश्नवाक्यम रचयत. तो पहलू, कृशाः कृषेः सहासते? तो जवाब आवशे कृशाः के सहासते. बीजू, गोष्ठेषु समागत्य यो यस्या प्रसवो भवति तेन सह गावः शेरते? तो जवाब छे कुत्र समागत्य यो यस्य प्रसवो भवति तेन सह गाव शेरते. त्रीजु, सह पृथिव्याः विकारः वर्तते? तो जवाब छे सह कस्या विकारः वर्तते. त्यार पछी चौथो सवाल, महाभास्करः संबंधस्य सिद्धांत सूचयति? तो जवाब आवशे महाभास्करः कस्यः सिद्धान्तः सूचयति. प्रश्न नंबर 6, अद्योततानाम प्रश्ननाम उत्तराणी गुर्जर भाषायां लिखत. पहलो सवाल, सजीवों स्वाभाविक सादृश्य कया कारणथी होय छे? उत्तर, खरेखर तो सजीव पदार्थों परस्पर जुदा जुदा लागे छे, परंतु आ जुदा जुदा पदार्थों में पण कोई स्वाभाविक सादृश्य होय छे. बीजू, अचेतन पदार्थों में सादृश्यनुं कारण शुं होय छे? उत्तर, अचेतन पदार्थों में गुरुत्वाकर्षण ने लीधे सादृश्यनो नियम देखाय छे. जेम के माटीनुं ढेफुं खूब वेगपूर्वक उपर फेंकेलुं होय तोय पृथ्वीनो विकार होवाथी पृथ्वी पर ज पाछुं आवे छे. त्यार पछी त्रीजो सवाल, ज्योति ऊपर तरफ शा माटे जाय छे?
उत्तर ज्योति सूर्यनो विकार होवाथी ऊपर तरफ जाय छे। दोस्तों, पाठ नंबर 17 ध्यानपूर्वक अभ्यास करवा बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। फरी मळीशुं पाठ नंबर 18 संपूर्ण सोल्यूशन साथे। संस्कृत विषयना बधा ज पाठना विडियो सोल्यूशन्स अने पीडीएफ नी लिंक तमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपवामां आवेला छे। तो आ विडियो तमे तमारा दोस्तों, मित्रों, भाईबंधो वगैरह साथे जरूरथी शेर करजो।